Hello viewers, my name is Ashok Sengupta from School of Management Sciences, Lucknow. Today we will discuss about the topic dividend models. So, before starting this topic we just discuss what is dividend, and previously we understand that what is dividend, what are the approaches of the dividend and what are the various type of dividend. This topic belongs to financial management and corporate finance subject in MBA. Today in dividend model topic we will discuss how dividend is relevant or irrelevant. What are the various theories given by the researchers about the impact of dividend in the value of the firm or not. So, the value of the firm can be maximized if shareholders wealth maximize. So, today companies are following this concept, or companies following that they understand that profit maximization is not an objective for long term. In long term, major objective is to maximize the wealth of the shareholder. Therefore, they are trying to maintain their dividend, and they have separate dividend policies, dividend decision making, through which they decided what amount of dividend need to be paid to maintain the investors satisfaction level, their faith on the company. On the other hand, what amount they have to retain for the future investment in the company's various activities. So, according to one school of thought, dividend decision does not affect the shareholders value, hence valuation of firm. Some school of thoughts said that there is no impact of dividend decisions on shareholders value or valuation of the firm. कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिविडेंड का किसी भी फर्म की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने में. On the other hand, some school of thought said dividend decisions materially affect the shareholder value and valuation fund. कुछ का ये कहना है कि पड़ता है डिविडेंड आप जितना पे कर रहे हैं उसका असर कंपनी की वैल्यू शेयर होल्डर की वैल्यू पे पड़ता है. सो वी विल डिस्कस टुडे हाउ दीज थॉट्स आर एप्लीकेबल एंड हु गिवन अस दिस काइंड ऑफ थॉट्स. सो फर्स्ट we discuss here the irrelevance concept. We will discuss about irrelevance concept. In irrelevant concept, our first model is residual approach. According to this theory, dividend decision has no effect on the wealth of shareholders or the price of the shares. Hence, it is irrelevant so far as a valuation of the firm. So, dividend decision have no impact, or it is irrelevant the valuation of the fund. There is कोई फर्क नहीं पड़ता. According to this theory, dividend decision no effect on the wealth of the shareholders. कंपनी कोई भी डिसीजन ले डिविडेंड के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर होल्डर की वेल्थ पर. This theory regards dividend decision mainly as a part of financing decision, because earning available may be retained for reinvestment. उनका यह मानना है कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग डिसीजन के बराबर ही होता है. इट्स लाइक अ फाइनेंशियल डिसीजंस. To maintain or retain the fund from the profit for future use, or you can say company can reuse its profit or invest its profit
in any other capital nature of expenses, investment, etc. So, if you decided to provide less dividend, you can retain more. If you give more dividend, you retain less, but whatever the decisions, pay more dividend or less dividend, it will not give any effect on the shareholders' wealth according to the residual approach. If the firm are not required in the business, they may be distributed as dividend. It is not a firm, it is fund. I am sorry, it is a typing mistake. It is fund, okay, it is fund. If the funds are not required in the business, they may be distributed as dividend. अगर ज़रूरत नहीं है तो डिविडेंड की तरह बांट दीजिए. Thus, to pay dividend or retain the earning may be taken as a residual decision. That is why is theory known as residual theory. तो डिविडेंड देना है या पे नहीं देना है इज ए काइंड ऑफ रेसिडुअल डिसीजंस, वॉट एवर, कुछ भी कर सकते हैं. ज़्यादा पैसा आ गया है, कुछ इन्वेस्ट आगे नहीं सोचना है तो डिविडेंड दे दीजिए, वरना रख लीजिए अपना. थ्योरी अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिविडेंड्स एंड रिटेंशन बाय द फर्म. उनका कहना यह है कि इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता, इन्वेस्टर डिफरेंस नहीं पता कर पाता है कि डिविडेंड बांटा है कंपनी ने, उसे रख लिया अपने पास. दे बेसिक डिज़ायर टू अर्न हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. उनका बस इतना डिज़ायर है कि जितना इन्वेस्ट किया उनका रिटर्न को ज़्यादा मिल जाए. तो रिटर्न ज़्यादा का मतलब है या तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़े, उसको बेच कर रिटर्न कर लें, या डिविडेंड उनको मिलता रहे. इफ फर्म इज नॉट पोजिशन टू फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, द इन्वेस्टर वुड प्रिफर टू रिसीव अर्निंग्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका पैसा उसको डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाए. सो दिस इज अबाउट द थॉट ऑफ रेसिडुअल थ्योरी. ओके, दिस इज अबाउट द रिलेवेंस थ्योरी में रेसिडुअल थ्योरी ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको बस अपना रिटर्न चाहिए, आप बाद में दीजिए, पहले दीजिए, किसी तरह दीजिए, उसका असर उसके शेयर वैल्यू पे नहीं पड़ता है. Second theory belongs to Modi, Gilani and Miller approach. They are two renowned researchers in the field of financial management, and they give their own thoughts in relevance theory. model have expressed its most comprehensive manner in support of the theory of irrelevance. उन्होंने अपने थ्योरी में को प्रूफ किया और उन्होंने इररिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट किया. दे मेंटेन दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय अर्निंग. मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर कोई असर नहीं पड़ता डिविडेंड पॉलिसी का. फर्म की वैल्यू बढ़ती है, फर्म की वैल्यू बढ़ती है उसकी अर्निंग से, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से, ये उनका मानना. देयर इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय द मोदी एंड मिलर. दे हैव सम assumptions for their model and these assumptions are very important. First assumption is there are
perfect capital market. So, you know what is capital market? So, there are perfect capital market. Second assumption is investor behave rationally. इन्वेस्टर का बिहेवियर रैशनल हो, इन्वेस्टर अपना काम ध्यान से दे और इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी इज अवेलेबल ऑल विदाउट एनी कॉस्ट. थर्ड assumption ये है कि कंपनीज के बारे में जो उसका जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज अबाउट द कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी cost. The investor no need to pay any extra money for to collect the informations. There are no flotation and transaction cost. That means, if you are going to purchase or invest a share, the cost will not high because of the flotation charges and transaction charges. Clear? No investor is large enough to affect the market price. It is very important. उनका कहना यह है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा, माना जाता है, अज्यूम किया है कि कोई भी एक इन्वेस्टर की वजह से मार्केट प्राइस चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स उसके पास इतना पैसा नहीं, वो इतना शेयर नहीं खरीदेगा या बेचेगा अकेले, उसके अकेले के दम पे वो मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. फर्म्स है रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है दे आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. सो दीज आर द assumptions of MM hypothesis. So, the arguments beside that MM hypothesis are also described, and with that argument they having a model to prove their theory. Increase in the value of the firm result from the payment of the dividend will be exactly set off by decline the market price of share, because external financing and because of the external financing, and there will be no change in total wealth of the shareholder. उन्होंने कहा ये कि डिविडेंड के पेमेंट से कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना मार्केट वो डिविडेंड देंगे उतना ही सेट मार्केट प्राइस सेट ऑफ हो जाएगा एक्सटर्नल फाइनेंस से, एक्सटर्नल फाइनेंस से उतना सेट ऑफ हो जाएगा. तो इस थ्योरी को उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि दे सेट देयर नो चेंज, एंड दे गिव देयर थ्योरी दैट P naught market price of the share at the beginning of the period, D dividend receive, D1 is dividend receive, market price at the end of the period P1, and K is the cost of equity. So, beginning of the period what was the market price of the beginning of the period can be calculated with the help of this formula. So, P1 can be derived from the same formula, P1 can be derived from the same formula. So, P1 equals to P naught 1 plus Ke minus D1. In P1 can be calculated by this. Okay, जैसे यहीं पे कर लेते हैं, P naught equals to D1 plus P1 equals to 1 plus K. This is the formula. P naught P1 निकालना है हमें, we need to calculate P1. So, P naught into 1 plus K equals to D1 plus P1, and P1 equals to P naught 1 plus K minus D1 minus D1. Yes, you can prove P1 equals to P naught 1 plus K minus D1. The MM hypothesis can be explained in another form, also presuming that investment required by the firm on account of payment of dividend
is financed out the new issue of share. That means कि अगर डिविडेंड पे करना है, अगर डिविडेंड देना है तो बाहर से पैसा लीजिए और उस पैसे से डिविडेंड पे कर दीजिए। और जब आप बाहर से पैसा लेंगे तो आपको न्यू इक्विटी इशू शेयर इशू करने होंगे। तो जब न्यू इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, कितने शेयर इशू आपको इशू करने हैं? नंबर ऑफ शेयर नीड टू बी इशूड to collect the fund through which you can pay the dividend. So, this having the different formula, m equals to I E minus n d1 divided by p1 and whole divided by p1. The further the value of the firm can be ascertained with the help of दी फॉर्मूला पी नॉट। ये वैल्यू ऑफ द फर्म है, ये फर्म की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है। तो एम मिला इसे हमारे यहाँ से, एम नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पहले में थे, इधर से एन, P1 हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट आई, ई फॉर अर्निंग ऑफ द फर्म एंड वी ऑल्सो हैविंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो these are the formulas which we require to understand and practice to find out the calculate the value of the firm. And for the value of the firm we required m, and m we calculate the m from this. Okay. So, better to understand this topic with the help of a question. See, AB Engineering Limited belongs to a risk class for the capitalization rate 10%, that means K is 10%. It currently having outstanding 10,000 shares selling at 100 rupees each. The firm is contemplating the declaration of dividend of rupees 5 share at the end of the current financial year. It expect to have a income of 1 lakh, यानी अर्निंग 1 लाख है होनी चाहिए, मान रहे हैं ये। एज ए प्रपोज न्यू मार्केट इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो 2 लाख रुपए का है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड पेड एंड नॉट, जब डिविडेंड दिया जा रहा है और नहीं दिया रहा है, उन दोनों केसेस में नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म। सो के 10%, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर यानी पी नॉट is 100 and dividend is 0 in case 1. This is the case, and this case 1 we not paid the dividend. So, what will be the value of the firm? So, in this case we need to find out P naught. So, we have P 100, K, dividend 0. So, value of the firm P1 is this. How we calculate that? 100 into 1.1 equals to 110. So, new value share price is 110. New share price is 110. Here we calculate P1. Now, earning is 1 lakh, dividend distributed 0, nil, investment 2 lakh. The balance fund required 1 lakh. So, third step is 1 लाख आपके पास 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 1 लाख आपने अर्न कर लिया, 1 लाख लेना है और कितने शेयर इशू करेंगे, कितने शेयर इशूज करेंगे? तो फंड रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय P1, P1 क्या है? नई प्राइस। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, 1 लाख डिवाइडेड बाय 110। So, put all the values in the formula to find out the
value of the firm. So, value of the firm is n plus delta n or new shares multiply by P1 investment plus E divided by 1 plus KE. Okay. Old number of shares 10,000. So, old number of shares is 10,000. New share 1 lakh divided by P1, 1 lakh divided by P1, 1 lakh requirement, and P1 is new value of the shares. So, 1 lakh divided by 110 multiply by P1. So, first solve this one only, first solve this one only. मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई 11. So, it is 1,02,000. $1,20,000 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 11 इनटू 110 कट गया 10 से. तो अमाउंट इज amount is 10. Okay. So, here is 1 lakh, ये आ गया माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख. सो कितना हुआ, 12 लाख में से 2 लाख गए. डिवाइडेड बाई 0. So, value of the firm is now calculated. So, value of the firm is now calculated is 10 lakhs. I again discuss this question because it is very important. ABC कंपनी को 10% मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट पर था. मार्केट में ऑलरेडी शेयर 10,000 थे जिनकी कीमत 100 रुपये ईच थी. ठीक है, यानी कि 100 रुपये ईच का मतलब कितना हुआ, टोटल कितने वैल्यू थी, 10 लाख. ओके, 10 लाख वैल्यू थी शेयर्स की. फर्म को 5 रुपया डिविडेंड देना था, अब उन्हें डिसाइड किया कि देखें डिविडेंड ना देकर या डिविडेंड देकर. इनकम कम फर्म की हुई 1 लाख, नया इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख का. हमने P0 यानी कि 100 रुपये से जो हमारा पुराना प्राइस था शेयर का, उससे नया प्राइस निकाला 110. फिर हमने नए प्राइस से यहाँ पर निकाल लिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने और इशू करने हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की और है, और शेयर की प्राइस 1,10,000 है.
तो हम निकाल लेंगे कितने शेयर और इशू करने हैं, और जब ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ द फर्म। जो हमने वैल्यू ऑफ द फर्म में पैसा यहाँ पर रखा, हमने यहाँ पर सारे वैल्यूज़ रखी, तो हमने ये देखा कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है अब भी 10 लाख ही आ रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म अब भी 10 लाख ही। दैट मीन्स even company is not paid the dividend, even company has not paid the dividend yet. There is no change in the value of the firm, there is no change in the value of the firm. Okay. So, this is about the first case where we taking that firm not distributed dividend. Now, we will take when firm distribute the dividend, जब 5 रुपये है उसने distribute किया, and I will discuss this topic when firm distribute the dividend in my next class, in my next video. Okay. So, my dear friend, I hope you understand that topic of irrelevance theory, and in also there is residual theory and MM hypothesis. Thank you for watching this video.